Let's get ready with me for a Diwali party. So I'm starting off with this Embrollus moisturizer. Trust me, ये moisturizer सबसे ज़्यादा अच्छा है. Actually सारे celebrity makeup artists और सारे bridal makeup artists यही यूज़ करते हैं. Then I've been using this D'Alba का serum spray and actually इसके ऊपर makeup sits so well that I cannot tell you. Like these two products has changed my skin prep game honestly. Then I'm using a darker shade concealer, Forever 52 का darker shade concealer on my face, and I'm just blending it with a brush. और उसके बाद I will just blend it with a sponge as well for that seamless finish. So you can see instead of a corrector I'm using a darker shade concealer and actually ये बहुत अच्छा वर्क करता है. इसकी consistency Forever 52 की concealer की consistency बहुत अच्छी है. And now I learned this from Meera Sakrani masterclass that after the concealer or correction she uses this Charlotte Tilbury का magic what do you say Hollywood filter. And honestly सच में आजकल मैं जितनी भी वीडियोस देख रही हूँ मेकअप की और आई थिंक जितनी भी मैंने रिसर्च की है सब ये यूज़ कर रहे हैं हॉलीवुड फिल्टर का बेस में, ताकि उधर जो डूई फिनिश आती है और जो अच्छी फ्लॉलेस फिनिश आती है इट एक्चुअली गिव्स दैट. तो इसको ब्रश से ब्लेंड करने के बाद आई एम यूजिंग अ ब्यूटी स्पॉन्ज और एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस ब्रश का ब्लेंडर एंड एक्चुअली इट्स सो गुड. देन आई एम यूजिंग दिस, आई एम नॉट यूजिंग फाउंडेशन टुडे बिकॉज थोड़ा लोकी रखने का मन था मेरा और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाती. Then I'm using this Charmisi का concealer. This is also a very nice concealer. इसकी consistency बहुत अच्छी है, बहुत creamy है, blend भी बहुत seamlessly हो जाता है. तो I've used that. Then I've again blended it with the beauty blender. ब्लेंडर से ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा सीमलेस और बहुत सब कुछ ब्लेंड प्रॉपर्ली हो जाता है, कुछ भी हार्श लाइन्स कुछ नहीं दिखती. तो यू कैन अप्लाई इट विद द ब्रश बट यू कैन ब्लेंड इट विद द ब्लेंडर. उसके बाद आई एम यूजिंग दिस रेयर ब्यूटी का ब्लश इन द शेड हैप्पी. ये इतना सुंदर पिंक ब्लश है आई कैन नॉट टेल यू. एंड इसको भी मैं एक स्टिपल ब्लश से ब्लेंड कर रही हूँ ऑन माई चीक्स. आई एम नॉट गोइंग अ लॉट ऑन माई चीक्स टुडे, लाइक मैं एप्पल ऑफ द चीक्स पे नहीं जाके एंड में थोड़ा लिफ्टेड लुक ही दे रही हूँ. तो आई जस्ट अप्लाइड दैट. अगेन इसको ब्लेंडर में जितना भी फाउंडेशन बचा है उससे यू जस्ट ब्लेंड इट फॉर दैट सीमलेस फिनिश एंड डजंट गिव एनी हार्श लाइन्स. उसके बाद मैं एक के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ. इट्स सो लाइट वेट, इट्स लाइक दिस के ब्यूटी का लूज पाउडर इज़ वेरी लाइट वेट एंड इट डजंट गिव यू एनी ड्राइनेस. सो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ. सो आई हैव जस्ट यूज इट विद अ ब्रश इंस्टेड ऑफ अ पफ. आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट विद अ ब्रश एंड एक्चुअली इट गिव्स सच अ डिफरेंस. लाइक वो बहुत ड्राइनेस केकी भी नहीं लगता, प्लस एट द सेम टाइम इट गिव्स दैट गुड फिनिश. देन आई एम यूजिंग दिस हूला का बेनिफिट का ब्रॉन्जर. Honestly, this bronzer is like the OG of bronzers. It works so well on your skin. It blends so seamlessly, doesn't give any harsh lines. The color is perfect. So I'm just using that on my cheeks, on my chin and on my forehead. And yes, I will also be using it on my nose. So nose की basically technique है that you have to blend it from your eyebrows to your nose so that it blends into your skin एकदम perfectly and it doesn't look कि nose आपने अलग से contour कर रखी है. So yep, I'm doing that. Now I will be doing my eyes. So for the eyes I'm using this Huda Beauty ka Naughty palette and it has such neutral good shades and I love it. It has all shades of brown. So I'm just doing my crease with the brown, light brown shade, not light but medium brown shade on both the eyes. And then उसके बाद on the edges I'm using a dark brown shade because I like my edges to be a little darker. So I've just used a darker brown shade and मैंने उसको blend किया है. पीछे is my husband who is just arranging his cover and who was not wanting to leave. So yeah. So again I've used this eyeshadow on my inner corners as well. So what I was planning to do is that on the outer corner and the inner corner I'll apply a darker shade and on the middle portion I'll just apply a glitter. So this I've applied the glitter. Like this is the best technique and the easiest way to apply your eyeshadow. I think just take a medium brown shade, apply it on your crease, then take a darker brown shade, apply it on your ends of your eyes, and on the middle you can apply a shimmer and it gives a good eyeshadow. Now I'm using this Forever 52 ka green kajal to do my lower eyes. I don't know, I'm obsessed with colorful kajal these days. So मैंने green kajal लिया है because my dress has some green detailing in it. And also I'm tight lining my upper eyelashes, upper eyes as well
with this, so that it gives you that green hue or shade whenever anybody looks at me. So yeah, I'm just doing that for that look. And then I'm extending it a little on my outer portion to give it a little wing. And I'll also be using a green eyeshadow on my lower lashes and on a little wing and inner corners to give it that seamless and yet poppy feel. Now I'm using YSL का mascara, which is like amazing, and ये instantly आपकी lashes को lift कर देता है. I just love this mascara, and as you can see, it instantly gave my face a beautiful lift. So I've been using this mascara and I've been loving it so much. The wand is so precise and so nice. I will also be doing my lower lashes with it. And now I'm just filling in my brows. I've taken the darker brown shade of the medium brown shade from that same Huda Beauty Naughty palette, and I'm just trying to fill it in. I like to keep my eyebrows very natural. तो ये मैंने बस वो डार्क ब्राउन शेड लेके थोड़ा सा फिल कर लिया है टू गिव इट लाइक जो गैप्स हैं उसको थोड़ा फिल करने के लिए एंड टू गिव इट सम डेफिनेशन. So I will be doing that, and then I'm using this MAC ka lip liner, and I'm just lining my lips. So basically, lip lining gives your lips so much more definition, so much, it enhances your look altogether. Now I'm using MAC ka Velvet Teddy. This has lately been my favorite lipstick, so I've just used that. And now I'm just setting my face using this setting spray from Charlotte Tilbury. It's again the OG spray, and I really, really love it. And now I'm just removing my hair clip, and this is the final look. So as you can see, like the makeup looks so dewy because of the base prep, because of skin prep and everything. And the makeup looks so nice, like all set for Diwali party, glam, yet not like, overdoing it. And I love the green kajal and the lashes and the look and feel which it is giving. And as you can see in the light also, the makeup looks so blended, so nice, so dewy. I've been just loving this look and doing my skin prep like this. And this is with no foundation. So, yep, let me know how do you like it, guys.